Uniyal. Hi everyone, how are you? Happy Navratri. So, good afternoon everyone. I'm Dr. Pooja Uniyal. I'm a senior consultant and IVF specialist at Medicover Fertility Rovini. And today we're going to discuss the topic like managing your unsuccessful fertility journey. So, we all know that a couple is said to be infertile when they have been trying with a regular unprotected intercourse for a 1 year of time and they're not able to conceive. Then we label the couple as infertile and they are going through a various emotional turmoil and they're very worried about what's going to happen when they're going to conceive, especially after the fact that when they try for a couple of years or a very long time and they're not able to conceive. So I will discuss today that how we can manage a patient in which it's being very difficult for the infertility journey have been very difficult and unsuccessful. So it's very hard to deal with IVF failure. It's really very hard. We counsel the patient, we meet with patients who have had undergone IVF multiple times and they have had failures every time. So it's very important to know that IVF success is not guaranteed. Even in IVF, when we are making your baby outside and we're implanting it inside your uterus, still the success is not 100%. It's usually 50 to 55% in a day 5 embryo transfer, which is blastocyst, and around 40 to 45% in a day 3 embryo transfer. So there can be many reasons why a IVF cycle failed. There can be many factors, which can be like the male factor, the female factor, and it's very exactly difficult to identify and tell the patient that this can be the factor. Or even if they have a good embryo quality, they have a good patient profile, they're a young patient, and even after that their IVF failure, it's very difficult to counsel them and to make them explain that it's not the only option for your fertility. It's not the only option how you can get pregnant and conceive. There are many other options. Even many patients after an IVF failure do get pregnant with a single IUI also. So you should never lose hope. So today we'll discuss that how can we increase the success or manage a case in which there have been previous failures. So first of all, it's very important you should know what exactly you need. As an individual couple, as an individual patient profile, we have to study and we have to see if the patient will get a result with IUI or the patient is an ideal candidate for IVF. If the patient is an ideal candidate for IVF and we give the patient IUI, we keep on doing IUI 1 time, 2 times, 3 times, 6 times. I have seen many patients undergone IUI for like 7 to 8 times. Usually people are getting ovulation induction letters, they're taking it for 6 to 10 cycles, and then they're saying it's been 10 months, it's been 1 year since we are taking medication and we're not able to get pregnant. Why is the result is so? What's happening? What's wrong with us? See, you have to individualize. Uh, you can't keep on doing IUI on patients who are actually a good candidate for IVF. And if they'll conceive once or twice in IVF, it's not, it should not be the fact that you are doing a patient is undergoing an IUI for like 6 or 7 cycles. So ideally, if there's a young couple who have an erectile dysfunction, having a male problem, then it's better to get an IUI done. But if the couple is an advanced age female, more than 35, with poor egg reserve, or there is more than one multiple problems with the couple, then they should be advised to go for IVF instead of multiple times during an IUI, which definitely decreases the emotional capability of the patient to have further cycles to get a pregnancy. So first of all, we should individualize the couple and we should know okay, which couple is best for IUI and which couple is best for IVF and give them treatment accordingly. Second thing, we know that why does an IVF fail? The IVF fail is usually majorly divided into three parts. The IVF failure can be first because of the semen quality, the male factor. It's not always about the female. There may be some defect in the sperm, there may be DNA fragmentation, the count, the motility. It may be male factor, the poor semen quality. It may be an egg factor, poor egg quality, which can lead to an abnormal embryo formation or embryo formation which are not that good grade. Secondly, there can be problem in the uterus of the female, which might disrupt the uterine receptivity. Even if we transfer a good quality embryo, the uterus is not able to implant it. There might be the uterus is still there might be dysynchronicity, and the uterus is not able to implant the good quality embryo, and the patient is not able to conceive. And thirdly, there can be the
any chronic illness or any condition of the maternal condition like stress, any other illness, or any other environmental factor, she's not able to have adequate rest, or she have to work, or any other environmental factor, she got covid, she has fever, or any other rest which I'll be explaining, it might also lead to a negative IVF. So when we actually go with that, I'll just give you first of all the top reasons why there's a failure in IVF pregnancy. First of all, embryo quality. Embryo quality is a very important and significantly impact your IVF success. Good good quality embryo, top quality embryo, top day 5 quality embryos hardly misses a chance of conception. If your uterus is fine, everything is fine, and there's no problem, and we transfer a good quality embryo, we usually expect a successful result. So your embryo quality mainly depends on your raw material, which is your sperm, your semen quality, and your egg quality. And when a patient, we usually check the patient's semen and the egg quality is just as by AMH. We see everything, and then we make the embryos. When the embryos are formed, we see the grading of the embryo. It's A grade, B grade, C grade. C grade embryo hardly conceive, and even the patient conceive, they end up in an abortion. So we have to transfer A grade or B grade embryo, and embryo quality is determined by the semen and egg quality, and we have to improve your semen and egg quality, which again have a further, you have to remove your stress, you don't have to smoke, you have to have a healthy balanced diet, where I'll be speaking about. So that will improve your egg quality, which will improve your embryo quality, which is very important. Secondly, uterine receptivity. There may be n number of problems in your uterus. Most commonly, they can be thin endometrium, there is inflammation, there is fibroid, there's adenomyosis, which is associated with endometriosis, which can actually hamper your uterine receptivity. And when your uterine receptivity is hampered, even a good quality embryo, when we do an embryo transfer, you're not able to conceive. The implantation is not there, and patients are really they are really worried that when we have done everything, why it's not fertilizing, it's not implanting. So it's because the uterus, there's a complex interaction between the uterine lining and the embryo. So there can be any hormonal balance, any inflammation, any fibroids or structural factor, which can actually lead to the which can actually hamper your implantation and lead to an unsuccessful pregnancy. Apart from this, there can be genetic abnormality. There are embryos which are genetic abnormal, which we can't diagnose if we don't do a PGT. We make your embryo, but it's not implanting. It might be because of advanced maternal age. Whenever you are coming with an age more than 35, there are high risk that the embryos form may be genetically abnormal, and they can lead to defect in implantation as well as early abortion. Apart from this, there are lifestyle factors. So for male, smoking, alcohol consumption, even for female, obesity and poor diet, they can actually affect your IVF outcome. Smoking can affect DNA damage, can affect DNA fragmentation of sperm and lead to defective sperm, which we are not able to see on the normal sperm count. But when we do an IVF or we do DNA fragmentation, we see that the embryos are not that good quality which are formed. It's just because of the smoking or alcohol, which is documented facts that it can lead to sperm DNA damage. Apart from that, definitely smoking also affect your ovarian quality, your egg quality, and poor diet can negatively affect your IVF outcome. You have to have a healthy, balanced diet, and obesity. Definitely, you have to work out at least 30 minutes a day, and you have to have a balanced diet. And these factors, your lifestyle factors, especially stress is a deadly thing. Stress do affect your overall health, your quality of your gametes, quality of your oocytes, eventually your embryo and your IVF success. If you are very stressed, then definitely it lead to negatively your IVF outcome. Apart from lifestyles, there can be ovarian response. Ovarian response is also a very important thing. We usually stimulate a patient with injections, which are gonadotropin injections, which are given for IVF. And if the patient is stimulated, over response, hyper response, or under response, low response, can lead to your IVF success. Because if there is over response, we'll get a number of eggs, but the quality of our eggs are poor, they're not that great. And if we get a hyper response, we get less infrons, we get less egg quality, less egg number, and definitely the embryos forms are no good, and this lead to IVF failure. So adequate stimulation,
with a good response is very important for an IVF success. Apart from that, there may be other underlying health condition in the female. For example, PCOS. In PCOS or polycystic ovarian syndrome, polycystic ovarian disease, we find a female who have a lot of number of eggs, lot number of. But when we take the eggs out, majority of the eggs are immature. They're not mature or not that good quality. So PCOS, ideally PCOS is not 100% treatable, but definitely you can increase your egg quality by decreasing your weight, by working out, by decreasing your stress, having a good 8 hours of sleep. You can increase your egg quality, and you can decrease the chance of getting immature oocytes during your pickup, even if you have a lot of number of eggs. Okay, so PCOD. Apart from it, any autoimmune disorder. I have seen many patients coming to me, and they have recurrent abortion at the 9 weeks of 9 weeks of gestation, 8 weeks, 9 weeks. We have given them low molecular weight heparin, enoxaparin, everything which we can do. But since then, when we investigated them, we know that they we came to find out that they have autoimmune disorder like SLE or APLA. So even if the patient is having any autoimmune disorder, it can actually lead to IVF failure. So you need to know any underlying condition the patient is having, any thyroid, any chronic diabetes. Even diabetes is a very common cause of having a semen problem, male factor. Even the embryos are formed and the embryos are said to be really bad. It's because the patient is not controlled even after having diabetes. Apart from that, there is a crucial implantation window. We have to implant the embryo in that implantation window. It has to be perfectly met. If you implant the embryo previously or delayed implantation, it can lead to failure because it's the implantation window where the uterus is receptive toward the embryo, and it's better to get the embryo transferred in that window. Okay. Apart from this, if you have had an undergone an IVF and it has failed, there are many things which we can do. First of all, we have to know what was the reason for your IVF failure. Was it because of your egg quality was pure, your poor, your sperm quality was poor, your uterus was not that good, or your embryos form were not that good, or there was some other factor like you after embryo transfer you had fever, or many patients had during the time of COVID era. We usually transferred the patient with good embryos, everything was went fine, and I was very sure that the patient will have a pregnancy, but the patient got COVID, the patient was severely sick, so the patient didn't end up into a pregnancy. So we have to know the fact also, we have to see what was the reason, क्या कारण था कि आप प्रेग्नेंट नहीं हो पाए अपने पुराने आईवीएफ साइकिल में. उन कारणों को ढूंढकर हम आपको नेक्स्ट आईवीएफ साइकिल में बेटर रिजल्ट दे सकते हैं. बिल्कुल. एक आईवीएफ फेल होना, दो आईवीएफ फेल होना, इसका मतलब ये नहीं है कि यू कान गेट प्रेग्नेंट. यू कैन एब्सोल्युटली गेट प्रेग्नेंट इन एनी साइकिल. Apart from this, there are many things like अगर कोई endometrial problem है, there is difficulty in endometrial receptivity, then we can do a hysteroscopy. हम hysteroscopy करके दूरबीन की जांच करके we can see कि अगर uterus में कोई problem है या नहीं, which will help you. A pre-embryo transfer hysteroscopy definitely helps you in the conception, next conception. Secondly, the other things like laser hatching, embryo glue जो हम embryo के साथ डालते हैं. There is no definitive thing, रेड और व्हाइट एरिया नहीं है कि होगा ही होगा या नहीं होगा नहीं होगा, बट इट्स स्टडीज हैव बीन डन, इट्स बीन शोन कि एम्ब्रियो ग्लू डज increase the chance of fertility, increase the chance of implantation with the embryo glue and laser hatching. When we have embryos with thick zona, then we do a laser hatching to thin out the zona shell, जिससे हम ये कर सकते हैं, रिजल्ट बेटर आ सकता है. और रेस्ट करना जरूरी है. ट्राई कीजिए कि उस टाइम पे आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जब आप एम्ब्रियो ट्रांसफर कराओ और कोई आपको प्रॉब्लम ना हो. अगर सब कुछ परफेक्ट है, सब कुछ ठीक है, तो यूजली पेशेंट डू कंसीव एंड दे गेट प्रेग्नेंट विद आईवीएफ. So, Mr. Rajiv Gupta has a question, and he has asked, Ma'am, can I know that one of my friends, she has taken 2 times IVF from Delhi AIMS and did not get pregnant. So can we go for IVF? Yes, Rajiv, absolutely. Absolutely, your friend can go for IVF because IVF is just a chance factor. That it's not the absolute indication that the patient has not. There are many patients who has come to me after previous 2 3 4 IVF failures, and then they conceive the next time. Some patient conceive through IVF only, IUI only. I have to know what the condition, why did she have this failure, and definitely it's not mandatory that it's a person is not able to conceive after 1 or 2 IVF, she will not conceive.
आराम से आप कितनी बार भी आईवीएफ करा सकते हैं और किसी भी आईवीएफ में आपकी पॉजिटिव प्रेगनेंसी आ सकती है। ज़रूरी नहीं है कि आपका 1 या 2 आईवीएफ फेल हुए तो आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकते। ओके, तो राजीव का एक दूसरा क्वेश्चन है, हर बोथ ओवरीज आर रिमूव प्लीज रिप्लाई। अच्छा, अगर उनकी दोनों ओवरीज रिमूव हो चुकी हैं बट उनका यूट्रस है और वो बिल्कुल ठीक है, तो हम तब भी एक प्रोसेस होता है, एक चीज होती है जिसको बोलते हैं डोनर आईवीएफ, जिसमें हम एग बाहर से लेते हैं। प्रोसीजर सेम होता है, डोनर को इंजेक्शन लगते हैं, एग उनसे हम लेते हैं, ठीक है, हस्बैंड का सीमन लेके उसको फर्टिलाइज करते हैं और यूट्रस में उनके बचदानी में हम एम्ब्रियो डाल देते हैं और वो प्रेग्नेंट हो सकती है। तो अगर उनके दोनों अंडदानी रिमूव है पर उनका यूट्रस ठीक है, और ऐसे ही अगर किसी पेशेंट को सर्जिकल मेनोपॉज आ गया है या उनका पीरियड्स बंद हो गए हैं, उनकी ओवरी नहीं कर रही है, ना एग बना रही है, पर तब भी वो प्रेग्नेंट प्रेग्नेंट हो सकती है। बहुत सारे पेशेंट 45, 47, 50 ईयर्स में भी प्रेग्नेंट होते हैं क्योंकि उनका यूट्रस है, बच्चेदानी है, तो हम डोनर आईवीएफ के द्वारा उनको डेफिनेटली प्रेग्नेंट कर सकते हैं। तो हेमंत जी का एक क्वेश्चन है, आर देयर लाइफस्टाइल चेंज और मॉडिफिकेशन दैट कैन इंप्रूव द चांस ऑफ सक्सेस इन फ्यूचर साइकिल? डेफिनेटली हेमंत, इफ वी नो दैट वी हैव अंडरगॉन एन आईवीएफ और उनके एग क्वालिटी या एम्ब्रियो से अच्छे नहीं बने, एग क्वालिटी हम डिटरमाइन कर सकते हैं एज से, उनके एग काउंट से जो कि एएफसी होता है, उनका एएमएच से जो कि एंटी म्यूलेनियन हार्मोन होता है। ये हार्मोन आपके एग का नंबर और क्वालिटी बताता है। अगर कोई पेशेंट हमारे पास आ रही है जिसका एएमएच कम है, उनकी एग क्वालिटी कम है और यही कारण है जिसकी वजह से आपका सक्सेस नहीं हो पाया, तो हम पेशेंट्स को मल्टीविटामिन दे सकते हैं, एक हेल्दी डाइट दे सकते हैं जिससे हम उनकी एग क्वालिटी थोड़ी सी बेटर कर पाए। या नेक्स्ट साइकिल में जब हम उनको आईवीएफ के लिए स्टिमुलेट करें तो हम इंजेक्शन चेंज कर सकते हैं, डोज बढ़ा सकते हैं, बहुत तरीके हैं जिनसे हम ये करा जा सकता है। और सीमेन क्वालिटी, अगर हस्बैंड का ऐसा है कि पेशेंट ज़्यादा स्मोकर है या अगर वो अपने अल्कोहल एडिक्ट है तो उनको ये दोनों बंद करना पड़ेगा बिकॉज एक्चुअली हैम्पर्स योर सीमेन। Apart from that, healthy diet, healthy lifestyle, working out, not taking any stress, and having a good night's sleep which for 8 hours is very important. So there's a question from Vikas: is IVF painful? See, Vikas, as such, the IVF is not painful, but IVF procedure consists of mainly 3 steps, which are stimulation, the egg pickup, and embryo transfer. स्टिमुलेशन के दौरान आपको 12 से 14 दिन के इंजेक्शन लगाए जाएंगे जो आपको टमी पे लगाते हैं, यूजली सबक्यूटेनियस। ये इतने पेनफुल तो नहीं होते। जब हम एग पिकअप करते हैं, एग निकालते हैं, तो आपको बिल्कुल बेहोशी एनेस्थीसिया में एग निकाला जाता है, तो वो भी इतना आपको कुछ पता नहीं चलता। और एम्ब्रियो ट्रांसफर इज एन एब्सोल्युटली पेनलेस प्रोसीजर। तो एज सच आईवीएफ इतना पेनफुल नहीं है, इट्स नॉट अ पेनफुल प्रोसीजर। तो ये सबको मिसकंसेप्शन या मिथ रहता है कि आईवीएफ बहुत लंबा है, बहुत पेन आएगा, इट्स नॉट दैट, नथिंग एट ऑल। हाँ, एक क्वेश्चन आया है जिसमें लिखा है, इज बेड रेस्ट रिकमेंडेड आफ्टर एम्ब्रियो ट्रांसफर? नो, absolutely not. Bed rest is not recommended after embryo transfer. There have been many studies for that, and it has been shown that bed rest बिल्कुल भी जरूरत नहीं है embryo transfer के बाद। I have been to London. I was in St. Guy's and Thomas in the IVF unit, and वहाँ पे embryo transfer करने के बाद the patient usually go for a walk and go for a ride. With absolutely the bed rest is not recommended. But you should not have any fever, any other thing. Like आपको ज़्यादा काम नहीं करना. You can do your normal activity, but you can't run. You can't, walk a marathon. But definitely bed rest is not required in IVF. सो मोहम्मद अहमद से मुझे आया है क्वेश्चन, व्हाट्स द रीजन फॉर मल्टीपल फेल आईवीएफ साइकिल? वही मैंने बताया, देयर कैन बी मेनी रीजन, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। जो मेनली होता है वो आपकी स्पर्म क्वालिटी में प्रॉब्लम हो, एग क्वालिटी में प्रॉब्लम हो, आपके एम्ब्रियो जिसमें अच्छे ना बने हो, या आपकी बच्चेदानी में प्रॉब्लम हो, या फिर आईवीएफ होने के बाद आप में कोई दिक्कत आई हो कि फीवर या कुछ आपने ज्यादा भाग दौड़ कर ली हो, कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है जो आईवीएफ फेल होता है मल्टीपल। या कोई ग्रॉस प्रॉब्लम है, अगर पेशेंट को एंडोमेट्रोसिस है, फाइब्रॉइड है, पेशेंट को डायबिटीज है लंबे समय से, तो हम वो पहले ठीक करके फिर आईवीएफ कराएं तो ज्यादा बेहतर है। मल्टीपल फेल आईवीएफ साइकिल होने का कोई ना कोई एक रीजन होता है और वो हमें ढूंढ के और फिर आईवीएफ करें तो आपके लिए बेटर है। So there's one question in which his Kumar Singh is saying, are there any additional tests or evaluation that can help understand the situation better?
Definitely, definitely. If the patient is having an abortion, she is having recurrent pregnancy loss even after um, IVF pregnancy, then we can go for an APTA profile, we can go for various thrombophilia profile or autoimmune disease. Many patients which are having recurrent pregnancy loss as 9 to 10 weeks usually have an autoimmune outcome. Usually. Apart from that, definitely, if this even the embryo quality which are formed up poor, then we can go for DNA fragmentation and we can see that DNA में ही प्रॉब्लम थी हस्बैंड की और हम उसको ठीक कर सकते हैं. उसके अलावा अगर किसी पेशेंट को रिकरेंट इम्प्लांटेशन फेलियर या आईवीएफ बार बार खराब हो रहा है तो हम ईरा करा सकते हैं, ईरा या एलिस विच इज एक्चुअली टिश्यू लेके वी कैन सी इफ देयर इज डिफेक्ट इन द विंडो ऑफ इम्प्लांटेशन, बट देयर आर मेनी टेस्ट. So one of my Vikas Rao asked, "What are chances of success in future cycle if one cycle failed in IVF?" Okay, so Vikas, see, every cycle, every IVF center has different success rate. They have a different IVF success rate. They have different clinical pregnancy rate. But definitely, we need to know what exactly was the cause that your IVF did not succeed, if the embryo quality was poor or there was any uterine factor. And usually, the IVF success rate around 50 to 55% is still the same. It's not that after doing multiple IVF, your success rate will decrease drastically. It's not like that. आपका सक्सेस रेट बहुत खराब नहीं होगा, आप दोबारा करवा सकते हो और आप उसमें भी प्रेगनेंसी आ सकती है आराम से. What are the treatment available for multiple unsuccessful fertilities? जी सैयद जी, अगर आपने आईयूआई कराया है और आपका आईयूआई, देखिए पहले तो आपकी फर्टिलिटी जर्नी डिपेंड करता है. अगर आप टाइम इंटरकोर्स कर रहे हो, आप संबंध बना के कंसीव करने की कोशिश कर रहे हो और जो प्रेगनेंसी नहीं हुई, तो आपको नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ना चाहिए. जो आपका नेक्स्ट स्टेप होता है वो है आईयूआई, इंट्रायूटाइन इंसेमिनेशन, जिसमें हम बच्चेदानी के अंदर हस्बैंड का सीमेंट डालते हैं जब ओवुलेशन का टाइम. और अगर आपका उससे भी कंसीव नहीं हो पा रहा और सब कुछ आपका ठीक है, सब फैक्टर आपका ठीक है, स्पर्म आपका अच्छा है, एग आपका अच्छा है, ओवुलेट टाइम पे कर रहा है, ट्यूब्स आपकी खुली हुई है, आईयूआई से भी आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे, 2 बार आपने ट्राई कर लिया, 3 बार आपने ट्राई कर लिया, तब आपको आईवीएफ पे जाना चाहिए. और आईवीएफ में आपकी यूजली प्रेगनेंसी आ जाती है अगर सब कुछ ठीक हो. पर अगर आपकी आईवीएफ में प्रेगनेंसी नहीं आ रही तो हमें देखना पड़ेगा कि क्यों नहीं हुई है. कुछ ना कुछ कारण होता है, या तो बचदानी खराब होती है या आपके स्पर्म और एग खराब होते हैं, और हम उनको ठीक करके फिर दोबारा आईवीएफ अटेम्प्ट कर सकते हैं. और बाकी अगर आपके देखिए बहुत और भी ट्रीटमेंट हमारे पास आ चुके हैं अब. जैसे अगर हमें एक आईवीएफ में सक्सेस नहीं मिला, दूसरे आईवीएफ में हम oocyte एक्टिवेशन कर सकते हैं. oocyte एक्टिवेशन एक तरीका होता है जिसमें हम कैल्शियम चैनल ऑन करके हम oocyte को एक्टिवेट करते हैं कि अगर स्पर्म फैक्टर्स कम हो तो उनका फर्टिलाइजेशन ज़्यादा अच्छा हो. इसके अलावा हम अच्छे स्पर्म्स ढूँढने के लिए जो स्पर्म क्वालिटी में आपके सबसे बेस्ट स्पर्म मिले, इसके लिए बहुत तरीके होते हैं, जो कि होता है पिक्सी, इम्सी, मैक या माइक्रोफ्लूइडिक्स, जो हम यूज़ कर सकते हैं एक बेहतर स्पर्म प्राप्त करने के लिए. और इन केस अगर आपका फिर भी सब एम्ब्रियो बन जाता है, अच्छी क्वालिटी होती है, तो वही हम एम्ब्रियो ग्रो या लेज़र हैचिंग आपकी साइकिल में ट्राई कर सकते हैं. और जब भी हम ट्रांसफ़र करें, ट्रांसफ़र से पहले हम हिस्टोस्कोपी ज़रूर करें, जिससे हम एक बार अपनी आँखों से आपका यूट्रस का लाइनिंग और सब कुछ चेक करके और फिर ही हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करें. सो एसके जे का एक क्वेश्चन आया है, हाउ डज डाइट एंड स्ट्रेस अफेक्ट fertility in both male and female? So first of all, I would like to tell कि there have been many studies and it has been documented that stress is a major factor which can impact both male and female fertility even before IVF and after IVF. स्ट्रेस एक ऐसी चीज है जो सिर्फ फर्टिलिटी नहीं, आपकी ओवरऑल बॉडी खराब करती है. स्ट्रेस आपकी सीमेंट क्वालिटी खराब कर सकती है. स्ट्रेस आपकी एग क्वालिटी खराब कर सकती है. स्ट्रेस आपको पीसीओडी भी करवा सकती है. स्ट्रेस आपके एग को कम भी करवा सकती है. ट्रांसफर होने के बाद अगर आप ज़्यादा स्ट्रेस लेंगे, ज़्यादा सोचेंगे, तो वो आपको नेगेटिव इम्पैक्ट कर सकता है टू गेट अ पॉजिटिव आउटकम. बहुत पेशेंट आते हैं जो एम्ब्रियो ट्रांसफर हो गया, सब अच्छा है, मुझे पता है 100% की प्रेगनेंसी होगी, पर वो इतने स्ट्रेस में रहते हैं, इतने डाउट. यू हैव टू बी पॉजिटिव ड्यूरिंग दिस जर्नी. दुनिया उम्मीद पर टिकी है. So you have to be positive and you have to stay. You will get pregnant when you will come. And when you think you'll get pregnant, then the universe will act and you will get pregnant. So stress definitely does affect. Stress, healthy lifestyle is very important.
Naga Raju just messaged me that working on long laptop effect infertility in male. Definitely Naga Raju ji, working on laptop. आप अगर अपने थाइस पे लैपटॉप रख के बैठेंगे बहुत गर्म रहेगा इट डेफिनेटली डिक्रीजेस द टेम्परेचर इंक्रीजेस द टेम्परेचर ऑफ योर स्पर्म्स जहाँ पर आपका स्पर्म फॉर्मेशन होता है आपकी टेस्टिस में वो आपका टेम्परेचर बढ़ा देती है और जब वो टेम्परेचर बढ़ा देती है तो वो आपके स्पर्म की क्वालिटी को इफेक्ट करता है बहुत देर तक गर्मी में रहना बहुत लंबे समय तक खड़े रहना ऐसा काम करना जिसमें आपको बहुत स्ट्रेस है बहुत भागा दौड़ी है या आप बहुत टाइट अंडरवियर पहनते हो ये आपकी सीमेन क्वालिटी को इफेक्ट कर सकता है बहुत देर तक लैपटॉप अपने थाइस पे रखना अवॉइड करिए या आपकी स्पर्म क्वालिटी को खराब कर सकता है बिल्कुल सो अंतुल जी का क्वेश्चन है व्हाट इज द कॉमन ट्रीटमेंट फॉर एंडोमेट्रोसिस एंड इट कैन बी ट्रीटेड कम्प्लीटली ठीक है देखिए एंडोमेट्रोसिस के बहुत ट्रीटमेंट होते हैं वो डिपेंड करता है कि आपका एंडोमेट्रोसिस का ग्रेड क्या है 1 2 3 4 एंडोमेट्रोसिस मतलब कितना सीवियर है उस पर डिपेंड करता है देखिए एंडोमेट्रोसिस कम्प्लीटली ट्रीटमेंट तो नहीं हो सकता उसको हम निकाल सकते हैं अगर आपके एंडोमेट्रोटिक सिस्ट बने हुए हैं वरना कुछ दवाइयाँ चलती हैं जिससे ये सप्रेस हो जाता है पर एंडोमेट्रोसिस का एक इंजेक्शंस होते हैं एंडोमेट्रोसिस की दवाइयाँ होती है जो हम चला सकते हैं पर इफ़ यू आर डूइंग एन आईवीएफ यू आर प्लानिंग आपकी फर्टिलिटी बचाओ तो मेन हमारा होता है कि हम आपके एग्स निकाल पाए आपकी ओवरीज अच्छी हो और आईवीएफ आपको करवाना चाहिए उसके बाद यू कैन गेट योर सिस्ट आउट पर एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ एंडोमेट्रोसिस बट हाँ ये ट्रीट हो सकता है इट्स ट्रीटेबल एंडोमेट्रोसिस फाइब्रोइड एडिनोमायोसिस ऐसा है जो हम 100% गायब तो नहीं कर सकते बट हम इसको सप्रेस कर सकते हैं और इसको ट्रीट कर सकते हैं कि आपको एक अच्छी प्रेगनेंसी दे पाए उसके लिए आलोक चंद्र जी ने पूछा है व्हाट आर द मॉडर्न टेक्निक्स अवेलेबल टू ट्रीट फर्टिलिटी मॉडर्न टेक्निक्स का मैंने आपको बताया मेल्स के लिए पिक्सी एमसी माइक्रोफ्लूइडिक which actually helps you to get a good sperm after good sperm selection for oocyte it's oocyte activation which can be do and there are many methods like IVM which is in vitro maturation in which if we get number of oocyte in which are immature तो हम IVF करके उनको mature बना सकते हैं जिससे आपके eggs number ज्यादा हो जब भी हम ट्रांसफर करें ट्रांसफर से पहले हिस्टोस्कोपी करें और ट्रांसफर करते वक्त हम एम्ब्रियो फ्लू या लेजर हैचिंग का प्रयोग करें और भी बहुत चीजें जो आपको मदद कर सकती हैं अगर आपका एक बार आईवीएफ फेल हुआ हो तो इज देयर एनी वे टू इंक्रीज द एग क्वालिटी ये क्वेश्चन पूछा है कृष्णा जी ने जी कृष्णा जी एग क्वालिटी यूजली डिटरमाइंड होती है पहले से जेनेटिकली हमें पता होता है कि हमारे एग खत्म होने वाले हैं या एग क्वालिटी परफेक्टली पहले से ही हमारी डिटरमाइन होती है कभी कभी हम स्ट्रेस लेके हम परेशान होके कोई लंबी बीमारी होके एंडोमेट्रोसिस होके हमारी एग पहले खत्म हो जाते हैं समय से पहले जिसको हम ओवेरियन फेलियर बोलते हैं पर एज सच एग्स नंबर बढ़ाने का तो कोई तरीका नहीं है अगर आपका एक उम्र में एएमएच इतना है तो वो उतना ही रहेगा वो वापस नहीं बढ़ सकता पर आपकी एग क्वालिटी और खराब ना हो इसलिए आपको मल्टीविटामिन लेना चाहिए आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए कोड डीएचए बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है कि ये आपकी एग क्वालिटी और कम होने नहीं देगा आपको प्रॉपर रेस्ट करना चाहिए और स्ट्रेस अवॉइड करना चाहिए शिल्पी जी का क्वेश्चन आया है हाउ लॉन्ग शुड आई वेट बिफोर कंसिडरिंग अनदर आईवीएफ साइकिल शिल्पी इफ यू हैव had an undergone an IVF cycle and you failed you can actually start in the next cycle if everything is fine if your eggs your DOM regulated your eggs number is fine your oocyte quality was good so I don't think you should wait for more you can even start in the next cycle there's no point of waiting for but if there has been some issue with the egg quality you can get take multivitamins for 1 or 2 cycle and then start your IVF procedure again एक मनीषा जी का क्वेश्चन आया व्हाट आर द नेक्स्ट ऑप्शंस अवेलेबल फॉर फेल्ड आईवीएफ साइकिल so Manisha what we have seen that we have to know what exactly went wrong and if you have failed IVF cycle then we can do an ICSI in the next cycle we can actually see your egg quality or sperm quality and if the quality is also very poor then we can opt for a donor IVF for uh, donor egg or sperm sample. But definitely, these are the following which are available for the failed IVF cases.
So Rajiv has again messaged one more thing that I want to know, that till what an IVF can take. Till what an IVF can take. Till age. What's the age for an IVF? So ideally, see, IVF whenever you want, whenever it's like you have to decide when you want to go for an IVF. But you should keep this in mind कि if you're continuing doing time intercourse, you're continuing doing IUI, आप जब तक IUI कराते रहेंगे, आपके एग्स वो खत्म हो जाएंगे। जब तक मेरे पास आप IVF के लिए आएंगे, कहीं भी आप IVF के लिए जाएंगे, तो मुझे उतने एग्स नहीं मिलेंगे, उतने उस साइट में रिकवर नहीं कर पाऊंगी। सो यू शुड बी, एक टाइम इंटरवल होना चाहिए। अगर 3 साइकिल में पेशेंट का IUI नहीं हो रहा, तो IVF में जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो एंड तक हमारे पास आए और हमारे पास एम्ब्रियो ही ना बन पाए अच्छे, या हमें डोनर पे जाना पड़े। आपके एग की एज मैटर करती है, बिल्कुल करती है। सो आइडली तो 50 से पहले ही IVF होना चाहिए। हस्बैंड और वाइफ की एज मिला के इट शुड नॉट बी मोर देन 103, दैट्स द गवर्नमेंट क्राइटेरिया। हस्बैंड प्लस वाइफ शुड नॉट बी मोर देन 103 द एज। एंड वैसे आपको जानना चाहिए कि IVF का सक्सेस, if a patient is doing it and in her 30s or 40s, is much less as compared to the patient is getting IVF done in 20. So point to note is that कि अगर आपको पता है कि there is a problem जिसका कोई और solution नहीं है IVF के अलावा। For example, मेल फैक्टर स्पर्म, आपने सब कुछ करा लिया, मेल फैक्टर स्पर्म काउंट बहुत कम है और आपको पता है ये पिक्सी इक्सी से ही हो सकता है, देन गो फॉर IVF इवन इफ यू आर 20। डोंट वेट टू क्रॉस 30 एंड देन कि अब एंड में जब बचेगा तब IVF कर लेंगे। पहले हम बाबा जी के पास चले जाते, वहां चले जाते, सब कर लेते। प्लीज बी श्योर, क्योंकि आप एंड पे आओगे तो आपके एग्स भी उतने नहीं होंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, डेफिनेटली अगर 20s में आपकी बायलेटरल ट्यूबल ब्लॉक है एंड यू 2 साल भी शादी को है बट ट्यूबल ब्लॉक है, तो यू शुड गो फॉर एन IVF। आपको आपकी कंडीशन पता चलनी चाहिए और जितनी जल्द आप IVF कराओ, सही चीज के लिए आपको कराना चाहिए, ज्यादा वेट नहीं करना चाहिए। और एज मैंने आपको बता दिया, हस्बैंड और वाइफ अगर 50 प्लस है तो हम अवॉइड करते हैं IVF। सो someone has messaged me, "Hi, ma'am, wonderful session going on. I have one question that the patients both ovary have big cysts. So the patient go for IVF and tell me the average cost also." Hi, you see, so first of all, definitely, if the patient both ovary has big cyst, we need to know what kind of cyst is that. हमें पता होना चाहिए कि क्लियर सिस्ट है या ये एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट है। जो IVF को सिस्ट बहुत तरीके की होती है, तो पहले बिग का मतलब हमें साइज पता होना चाहिए। अगर वो 4 सेंटीमीटर से ज्यादा है या वो हमें IVF प्रोसीजर में दिक्कत लाएगी, हम उसमें एग्स नहीं निकाल पाएंगे जब भी हमारी निडल उसको पंचर करेगी, तो हमें वो सिस्ट निकालनी पड़ेगी। और पर अगर वो सिस्ट आपकी क्लियर सिस्ट है जो कि दवाइयों से खत्म हो सकती है, जो कि ठीक हो सकती है, तो हम उसको ठीक करके और फिर IVF करना चाहेंगे। हम अगर सिस्ट के साथ हम IVF कर सकते हैं तो हम साथ में ही IVF करना चाहते हैं, क्योंकि कभी कभार जब हम सिस्ट के लिए ऑपरेशन करते हैं और वो सिस्ट निकालते हैं तो उसके साथ जो आपका नॉर्मल हेल्दी ओवरी का टिश्यू होता है वो भी निकल जाता है। और अगर आपका हेल्दी नॉर्मल ओवरियन टिश्यू निकल जाता है तो फिर वो आपके एग्स बनने में, आपके IVF में प्रॉब्लम करेगा। तो अगर आपका कोई सिस्ट है, बहुत बड़ा सिस्ट है जो IVF प्रोसीजर में भी दिक्कत करे और आपको हमें एग्स निकालने में प्रॉब्लम करे, डेफिनेटली हम उसको निकालेंगे। पर अगर आपको ऐसे लगेगा कि एग उससे और कम हो जाएंगे, तो पहले हम आपका IVF कर सकते हैं। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, IVF करके हम एम्ब्रियो बनाए, फिर वो सिस्ट निकालें और फिर आपका ट्रांसफर करें। और IVF की कॉस्ट जो होती है वो हर सेंटर्स पे अलग अलग होती है, पर अराउंड 1.5 to 2 lakhs इसमें लग जाता है। So, Upinder ji had just asked me how many IUI cycles are recommended. So, Upinder, if a patient have a healthy sperm, the eggs are fine, ovulation हो रहा है, ट्यूब्स खुली हुई है, तो पेशेंट और यंग पेशेंट है, टाइम भी ज़्यादा नहीं हुआ शादी के, तो दे कैन अंडरगो 3 to 4 साइकिल्स ऑफ IUI। पर अगर वो 3 से 4 साइकिल IUI जिसमें सब कुछ परफेक्ट है, उन्होंने टाइमली IUI किया है, IUI के साथ इंटरकोर्स भी हुआ है और तब भी वो कंसीव नहीं कर पा रहे, तब दे शुड गो फॉर IVF। बट या 3 to 4 cycles of IUI they can give a try if everything is fine. So, okay. So, JE has asked me how to manage stress during the process. See, JE, stress तो लाइफ में रहेगा ही। स्ट्रेस तो हर जगह, हर इंसान को हर वक्त है।
आपको मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। मैनेजिंग के लिए हमारे पास वी हैव गुड काउंसलर्स, वी हैव गुड इमोशनल सपोर्ट जो आपको हेल्प करेंगे। दे विल टेल यू अबाउट द एक्सरसाइज़, अबाउट द डाइट जो आपको स्ट्रेस में हेल्प कर सकती है। कुछ मेडिसिन्स भी हैं जो आपको एक्चुअली स्ट्रेस रिलीव करने में हेल्प करेगी। अपार्ट फ्रॉम दैट मेडिटेशन, आप मेडिटेशन करो, आप वर्कआउट करो, आप जिम जाओ, आप 8 घंटे सोओ और आप पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव थिंकिंग, सब कुछ आप करोगे तो डेफिनिटली आपका स्ट्रेस रिलीव हो जाएगा। So yoga has actually messaged me how many fibroids hamper to conceive. So yoga actually the number of fibroids are not criteria which we can say the patient get pregnant or not. Fibroids आपको कितने भी हो डिपेंड करता है कि फाइब्रॉइड कहाँ है। अगर आपकी फाइब्रॉइड जो एंडोमेट्रियल कैविटी है जहां हम बेबी डालेंगे और जहां बेबी ग्रो करेगा 9 महीने उसको डिस्ट्रॉय कर रही है, उसको इंडेंट कर रही है, आपकी अगर आपकी फाइब्रॉइड जो एंडोमेट्रियल कैविटी में बेबी जाएगा उसके अंदर है तो वो आपको हैम्पर करेगा। अगर वो फाइब्रॉइड 6, 7, 8, 10 है पर वो बाहर है सब सिरोजल यूट्रस के बाहर है या यूट्रस में इंट्रामायोमेट्रियल है दूर कैविटी को इंडेंट नहीं कर रहे तो वो हैम्पर यूजली नहीं करते। तो नंबर ऑफ फाइब्रॉइड से ज्यादा द टाइप ऑफ फाइब्रॉइड इज इंपॉर्टेंट। फाइब्रॉइड अंदर है तो वो दिक्कत कर सकता है पर फाइब्रॉइड बाहर है और छोटे हैं तो वो प्रॉब्लम नहीं करेंगे। साइज डज मैटर, अगर आपका फाइब्रॉइड बहुत बड़ा है तो वो भी आपका हैम्पर कर सकता है। नंबर से ज्यादा साइज और लोकेशन ऑफ फाइब्रॉइड, टाइप ऑफ फाइब्रॉइड इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अगर वो एंडोमेट्रियल कैविटी को जहां कैविटी में बेबी डालेंगे उसके अंदर आए या उसमें प्रॉब्लम करे। Thank you, Dr. Sindhu ji, saying it's very impressive. Okay, thank you so much, Sindhu ji. So I think I'm done for today. That's all. It was really a good session. And if you have any problem or anything, you can actually consult me regarding your fertility. You're most welcome. And all the best. Happy Navratri, everyone.